So this is the question number 2 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic exceptional handling in Python. So in this particular question, it has been asked when is the finally block get executed. So in order to answer this one, we need to be aware about the finally clause in exceptional handling. The first thing about this one is it is optional in nature. That means you may no need to write finally clause in the exceptional handling. Moreover, जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी है इस फाइनली क्लॉज के अंदर वो क्या होंगी, हमेशा एक्सिक्यूट होंगी, चाहे आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन रेस हो या ना हो. एंड वन मोर पॉइंट, अगर आपको फाइनली ब्लॉक को यूज करना है तो इट शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ द ट्राई एक्सेप्ट क्लोज. ओके, तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कोई ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है तो उस केस में क्या होगा, पहले ट्राई होगा. ट्राई के अंदर क्या हो सकता है कि जो स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्शन रेस कर सकती है उन्हीं एक्सेप्शन को रेस करने के लिए क्या करोगे, आप सिस्टम को एक्सेप्शन हैंडल लगाओगे. देन एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स वो एक्सिक्यूट होंगी जब ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी. एंड देन फाइनली विच इज ऑप्शनली इन नेचर, इसके अंदर आप जो मर्जी स्टेटमेंट लिखो वो फाइनली एक्सिक्यूट होंगी ही होंगी. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि फाइनली क्लॉज काम कैसे करता है. Hence, for this one, option number D is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. Now, you need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then, thanks for your time.